Hello everyone, welcome back to my channel. So for this DIY, I'm going to use this kind of thali and इस थाली पे साइड पे थोड़ा सा स्पॉट आ गया था. That's why I'm going to use it. So firstly हम लोगों को बेस प्रिपेयर करना है, जिसके लिए I'm going to use a primer. ये प्राइमर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो. मैंने लोकल ब्रांड का लिया है. एंड विद अ पेंट ब्रश आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई डिफरेंट कोट्स. सो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कोट यूज़ किए हैं टू गिव इट अ मैट लुक. सो सिंस दिस इज़ गोइंग टू बी आर बेस, मैं सिर्फ इसको रफली पेंट कर रही हूँ. मैं कोई टेक्सचर नहीं दे रही हूँ. एंड आई एम जस्ट रफली कवरिंग द होल बेस. So for this thali, I have applied 2 coats. If you want, you can apply as much as for your requirement. So 2 coats of primer के बाद our base is almost ready. And अब मैं इसको साइड में रख दूँगी to let it dry. And after few minutes, our base is almost ready. इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी मैट है. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट डेकोरेटिंग द प्लेट, अदरवाइज यू कैन जस्ट कलर इट. एंड सिंस माई मॉम लव्स रेड, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस रेड एक्रेलिक कलर एंड अ स्पॉन्ज लाइक दिस. एंड इस स्पॉन्ज की हेल्प से आई एम गोना अप्लाई पेंट ऑल ओवर द बेस. So here I'm using a sponge, not a brush, because sponge से अगर आप डैप करके पेंट को अप्लाई करते हो तो वो एक टेक्सचर देता है. सो अब पेंट तो मैंने कर दिया है. नाउ आई एम गोइंग टू कीप इट असाइड टू लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम. मैंने इसकी बैक साइड को पेंट नहीं किया है, जस्ट द फ्रंट साइड. And our base is ready to be decorated now. So now I'm going to use different kinds of mirrors and studs to decorate it. And also I will be using Fevicol here to stick the studs and the mirrors. So here I would suggest you to draw a rough diagram of the design that you have in mind. अगर आप रफ डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपके जो स्टोन्स हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे.
थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे मैंने बहुत रैंडमली स्टोन्स एंड मिरर्स लगाए हैं बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो पहले से डिज़ाइन सोच के रखता है. आई डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली एंड दैट इज़ हाउ आई मेक ऑल ऑफ माई DIYs, मोस्ट ऑफ माई DIYs एक्चुअली. सो मैंने ऐसे ही धीरे धीरे करके रैंडमली स्टड्स एंड मिरर्स ऐड किए, बट उसके बाद भी मुझे ये बहुत खाली लग रहा था. सो आई देन स्टार्टेड experimenting and added different kinds of studs and mirrors to it and added more charm to it, and this is how our final thali looks like. And I am so obsessed with this thali that I just can't wait to use it for the Diwali puja. I hope you loved the video. If you did, let me know in the comment section. Share this video with your friends and family and subscribe to my channel for more such videos for this festive season.